कि मेरी कोई तो बात सुन भी नहीं रहा था। मुझे खुद भी ऐसा महसूस हो रहा था, लैक द क्रेडिबिलिटी रियली लाइक हैव एन ओपिनियन। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे बच्चे की ओरिएंटेशन है या कोई पीटीएम है, आई विल ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज माय चाइल्ड। वी हैड पीपल इन आवर टीम जिनके बेबीज आ रहे थे, लाइक आदमी अपने बेबीज को घर ऑफिस लेके आ रहे थे, सो दैट द वाइफ वाज आल्सो वर्किंग। वहाँ पे नर्सरी नहीं थी, तो एक थोड़ा सा हमने बर्स्ट दिया था ऑन एयर, बट आई कुड हैव सेव्ड दैट मनी एंड डन समथिंग एल्स विद इट टू क्रिएट द सेम काइंड ऑफ मार्केटिंग हाइप। दैट वाज अ मिस्टेक। मुलाकात जरूर करना चाहती हूँ, मैं पूछती हूँ कि आपकी बहनें बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, अच्छा, बेटियां बिजनेस में इन्वॉल्व हैं? नहीं, स्पेस खुद भी बनानी पड़ती है। You are the first woman from Pakistan joining this Champions of Change coalition. How are you part of it and how are you like adding value? काम से नहीं डरना चाहिए। हंगर तो सब में होता है, सब ग्रेजुएट करके चाहते हैं कि भाई हमें फलां जगह बेस्ट नौकरी, बेस्ट ये, बेस्ट जॉब, बेस्ट मनी, एंड लर्निंग हाउ टू डील विद दैट कि नहीं, इट्स ओके, हर चीज़ नहीं आती आपको, आप सीख जाओगे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। सब गलतियां करते, बट लगे रहो। आई लाइक द वर्ड हसलिंग। समवन आस्क्ड मी हाउ यू डूइंग, ऐसे आई एम स्टिल हसलिंग बिकॉज लाइफ इज अ हसल। लाइक आपने करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। Hello, welcome back to another episode of Hustle. मेरे साथ मौजूद है आज समर सुल्तान, चेयरपर्सन ऑफ शान फूड्स। बहुत ही जबरदस्त कॉन्वर्सेशन होने वाली है, लेकिन दोस्तों उससे पहले यू हैव टू सब्सक्राइब। हम कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतरीन गेस्ट आपके लिए लेकर आएँ जिनसे आप सीख सके, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हसल। हेलो समर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सबसे पहले ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? It's fun. I like the vibe of the office. It's happening. थोड़ा सा हलचल है. It's हसल है पीछे, हाँ, आपके पीछे हसल भी है। हसल है, मेरे पीछे भी हसल है। बिल्कुल absolutely. तो मुझे ये बताएं कि अभी जहन में कुछ चल रहा है, कुछ मसरूफियात, या बिकॉज योर आई कैन कम्प्लीटली हैव यू ऑल हियर? No, I'm absolutely with you. Of course, काम तो चलता रहता है, और there we sometimes it's a lot of work and sometimes not so much. But today you caught me at the end of a busy day. So. क्विक रिकॉल करें अपनी जर्नी को। आपने कहाँ से पढ़ा है और कहाँ से सीखा है बिजनेस के बारे में, और फिर पहला काम आपने क्या शुरू किया, लाइक डायरेक्टली जम्प्ड इनटू शान और व्हाटएवर अर्ली जर्नी? So I went to Indus Valley and I graduated as a fine artist from there. And then I went to Sotheby's, वहाँ मैंने art and business पढ़ा। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आई और मैंने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया। और उधर भी मैं डायरेक्टली, लाइक आई वाज एन एग्जीक्यूटिव लेवल पर्सन एट द टाइम, एंड आई लुक्ड आफ्टर क्रिएटिव। मैंने एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट सेटअप किया वहाँ, जो एक नेशन आर्ट डिपार्टमेंट होता था, तो उसको वी टर्न इनटू अ क्रिएटिव डिपार्टमेंट। आई सेट दैट अप एंड वेरी क्विकली आई रियलाइज दैट आई वाजंट गोइंग टू बी एबल टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू राइट अवे, क्योंकि मेरी कोई तो बात सुन भी नहीं रहा था, और मुझे खुद भी ऐसा महसूस हो रहा था, आई लैक द क्रेडिबिलिटी टू रियली लाइक हैव एन ओपिनियन. So at the end of that first year after I graduated, I started a business with a partner called Lollipop and Laddu. Okay. It was a video company, videography company and photography. And we bought the trend of these, the non-traditional video format for weddings. We introduced that in Pakistan. So that's been a journey as well. That was very interesting. And I did that part-time, full-time for till about 2014 when I had my kids. जब मेरी बेटी हुई तब मुझे मुश्किल हुआ कि शूट्स पर जाना रात में होता था, वाज अ नाइट टाइम जॉब, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज दैट। सो दिन में मैं ऑफिस जा रही हूँ और रात में हम लोग ये काम At what age you got married? I got married at 27. 27. Yeah. Okay. And that was like by choice कि आप 27 तक वेट करें, या 20 से प्रेशर आना शुरू हो गया था? या प्रेशर तो आई थिंक पाकिस्तान में 16 से ही आना शुरू हो जाता है कि 18-20 में शादी कर लो। सो वी आर साउथ एशियन, and that pressure is just part of, no matter where you are and who you are, you still have to listen to that कि अब शादी का वक्त आ गया। But of course my parents were never going to get me married before I finished my education, but फिर भी बोलते तो वो भी थे and other people, and like nobody, you can't stop the society from asking कि कब शादी होगी। So of course there was pressure. And then when you got married, तो फिर और आपने कहा बेटी हुई, तो उसके साथ भी काम हैंडल करना, और आप कह रही हैं कि रात में ऑफ कोर्स शूट्स और वीडियोग्राफी या इस तरह की जॉब सब करनी ही पड़ती हैं, तो फिर हाउ वाज द वर्क लाइफ बैलेंस बेसिक? So I because I was pregnant, it was hard for me, like in terms of just getting tired, क्योंकि मैं दिन में काम कर रही थी। मैंने अपने I was one of the first friend in my close knit circle of friends जिनकी शादी हुई थी। कुछ की शादी बहुत जल्दी हुई थी, तो उनको मैं काउंट नहीं करती, but from the people who stayed single till they were about 24-25, I was the first person to get married, and consequently the first person to have a child. So I was almost militantly, of the belief कि मैं तो वही हूँ, so what if I'm pregnant?
So I didn't, and I also kind of fervently believed कि औरतें जंगलों में बच्चे पैदा करती हैं, डेजर्ट है उधर पैदा करती हैं, कोई पानी में पैदा कर रहा है, कोई कहाँ, को आइसलैंड में, एवरीवेयर यू हैव दीज डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. आपने ब्रेक्स लिए थे? I took maternity breaks after I had the kids. I worked up to the time that I had to could, and then फिर मैंने after the baby I would take a break for a little while, which is necessary also. हाँ, of course, So, of course. You don't have to torture yourself, So yeah. So what was your question again? Originally, जो आप पूछ रही थी? Work-life balance. Work-life balance. Work-life balance is a misnomer. Because it can never be truly in balance. Sometimes कुछ चीज़ें काम की तरजीह लेती हैं और कभी आपकी फैमिली तरजीह लेती है. I can't get up and leave at 5 just because time's up, right? Like if I'm passionate about something, then मैं घड़ी देख के तो काम नहीं कर रही ना. और बच्चों के साथ भी, if I'm enjoying myself with them and if I'm giving them quality time, not the quantity of time, then the time with them is precious too. So जो भी आप कर रहे हो वो आपके लिए important होता है. तो हो सकता है कि किसी दिन मैं देर से वापस आई और उस दिन मैं टाइम नहीं दे पाई बच्चों को, लेकिन हो सकता है उसी वीकेंड मैं 24 घंटे उनके साथ हूँ, एंड आई एम गिविंग देम मोर टाइम एंड गिविंग देम मोर माइंडफुल टाइम टू मेक अप फॉर इट. सो you don't find balance in a day, but you find a balance overall. So there may be days where you prioritize one thing, maybe days, मुझे कुछ दिन है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे बच्चे की ओरिएंटेशन है या कोई PTM है, I will obviously prioritize my child. So on that day, the whatever important meeting will take a back seat. So that it's not an easy balance to strike, but you get there. एक और aspect है जो कि शायद लोग समझते नहीं है. My father's he's obviously done a lot in his life. He's achieved so much. There are very big shoes to fill, and on some level, you can't ever believe that you're going to fill those shoes. So you're already starting from a place of insecurity. So I just wanted to work on myself and to myself prove कि हाँ मैं कर सकती हूँ. कि if I ever have to build my own reputation, my credibility, it should come from a place of experience. So फिर मैंने वो experiences design करना शुरू किया अपने आप के लिए. There were things that I'd always wanted to do. जो restaurant खोलना था, शौक था मुझे. और जब आपके पास बहुत experienced वालिदैन होते हैं तो आपको मशवरे देते हैं, तो as a young adult आपको नहीं सुनने होते वो, आप रेजिस्ट करते हो उनके मशवरों को. आप बोलते हो कि नहीं मुझे बेहतर पता है, मुझे पता है. So my father really discouraged me from opening a restaurant. He told me the truth about it. It's a difficult thing and maybe you are glamorizing the life of a restaurateur. इतना आसान नहीं है. Okay. और मैं उनको बोलती थी मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि आसान है, मैं इसलिए करी क्योंकि मुझे करना है. तो खैर उन्होंने मुझे इवेंचुअली तो सपोर्ट किया because I did it, but initially उनकी तरफ से था कि find a more scalable business. And I didn't understand that at the time. That maybe what I'm doing, the effort that I'm putting into it, उसका risk to reward ratio बहुत skewed है. बहुत सारे restaurants खुलते हैं, बंद हो जाते हैं. And I will say now, in retrospect, that मैं अपने दुश्मन को भी ना बोलूँ कि restaurant खोले. So, अच्छा. It's a tough business. He was right. And I learned a lot though. I learned about food service. It helped me eventually in Dipitt. मेरे बहुत connections बने. मैं लोगों के psyche को समझी, consumer को समझी, मैं social media को समझी, because as a restaurant owner, working in a Pakistani kitchen, जहाँ हमारे मर्द हजरात 99% of the staff in a kitchen and service staff is men. हर आए दिन बाल कोई निकल रहा है, कोई hygiene का issue, कोई मक्खी गिर गई. These are the things we have to work with in Pakistan, right? So ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हर रेस्टोरेंट ओनर को पता है कि ये challenges आते हैं. चाहे आप जितने gloves पहना दो, चाहे आप जितने मतलब however much you cover, there's still some aspect of contamination that could occur. So learning how to deal with social media in that regard, because every day someone's putting up a bad review, even if it's 1 out of 100 great ones, वो एक review की वजह से आपकी जो dips आते थे. And थोड़ी सी the time that we did that, it became very toxic. अब थोड़ा मुझे लगता है बेहतर है. Like people are not as vicious. वो जो रेस्टोरेंट वाली आपकी जर्नी है, आपने खोला रेस्टोरेंट और फिर जो फेलियर्स थे, थोड़ा सा उस पर भी बात करें. Failure उस तरह से नहीं थी. I think COVID was the catalyst for why I closed that business. क्योंकि खोलना बंद करना from a cost point of view, it doesn't make sense. So उसी simultaneously क्योंकि COVID में restaurants बंद हो गए थे, मेरा जो दूसरा business था वो उस पर जा रहा था. It was growing. So I pivoted my focus from the thing that wasn't working to the thing that was working, and I completely focused on Dipitt then. तो again वही कहती हूँ ना, जितनी मेहनत आप कर रहे हो उसमें आपको रिवॉर्ड कहाँ मिल रहा है.
So Dipitt was then more rewarding than the restaurant business, and then, as my dad said, more scalable also. So that made तो sense. डिपिट की जर्नी पे बात करते हैं, क्या लर्निंग्स रही, क्या टेक अवेज है? फेलियर्स वहाँ पे भी होंगे, गलतियाँ वहाँ पर भी होंगी। गलतियाँ तो आप हर चीज में करते हो ना. It's don't be afraid of that. You'll make mistakes constantly, हाँ. even if you have the best advisors and the best mentors. Tell us about some mistakes. Some mistakes that we made in Dipitt or Shan or overall. Dipitt. हमें अंदाज़ा नहीं हुआ था हम स्केल कितने जल्दी करेंगे. तो हम एक दफ्तर खोलते थे. We rented an office above our restaurant, same building, and we invested some money in making it look nice because we wanted to attract good people to join us. तो उस पर पैसे खर्चे. फिर कोई 6-8 महीने बाद वो जगह छोटी पड़ना शुरू हो गई. फिर हम एक और जगह गए. फिर वहाँ हमने जो भी थोड़े बहुत पैसे लगा के उसको बेहतर किया, थिंकिंग कि यहाँ 1-2 साल हम यहाँ गुजार लेंगे. Again, within 6 months वो जगह छोटी पड़ गई. So I think we moved like 3 or 4 offices and each time spent money doing that, but also did not realize that scale would come so quickly, that we would grow, alhamdulillah, fast. And गलतियाँ था, I can start and not finish because we continue to make mistakes. Top 3 बताएं जो आपको याद हो, biggest blunder. I advertised on TV when I didn't have enough distribution. Mistake, right? Like we didn't have enough coverage, but it was done because जब हम दुकानदार के पास जाते थे शुरू में तो वो हमें जानता नहीं था. और वो पहले साल नहीं 2-3 साल बाद ही हमने एक burst दी थी because we were really having trouble because there was a certain percentage of the market we were capturing easily. उसके बाद then the shopkeepers would resist that we've never heard of this brand. इसका तो हमने कभी TV ad पे नहीं देखा, TV ad नहीं देखा. Even though हम digital videos बना के डिजिटली चला रहे थे, बट वो बिकॉज टीवी पे नहीं आया था तो वो ब्रांड परसेप्शन थी कि ये छोटा ब्रांड है, तो हमें छोटे ब्रांड नहीं रखने हैं, ये नहीं चलेगा, ये कोई नहीं जानता ऐसे. तो एक थोड़ा सा हमने बर्स्ट दिया था ऑन एयर, बट आई कुड हैव सेव्ड दैट मनी एंड डन समथिंग एल्स विद इट टू क्रिएट द सेम काइंड ऑफ मार्केटिंग हाइप. सो दैट वाज अ मिस्टेक. तो उसको खोलने का भी मकसद ये था कि हम इजाज़तें ना लें किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो. जो गलतियाँ वो मेरी हो, ज़ीशान की हो. So Zishan's my husband and also partner at Dipitt. So I wanted to own all the mistakes and I wanted to own all the glory of it too. मतलब अगर कुछ अच्छा किया वो खुद किया, क्योंकि वही जो आप नेपोटिज्म की बात करी ना, ये बार बार सुनने को मिलता था कि ये तो तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए करके दिया है. We still hear it all the time, Zishan more than me, that ये तो तुम्हारे ससुर ने करके दिया है या ये तुम्हारे फादर ने करके दिया है. And we made it very clear. Of course we do take facilitations wherever we can, जहाँ पे synergies बनती हैं तो हम उसको absolutely मिल करते हैं. बट बहुत दफ़ा जितना हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं हम कोशिश यही करते हैं कि इंडिपेंडेंट रहें. उसमें मज़ा भी ज़्यादा आता है because we can do however we want without anyone saying, and we have a board, alhamdulillah, वो guide करता है हमें. तो yeah, it's been a fun journey so far. Actually ये बहुत interesting part है कि as a female leader specifically एशियन सोसाइटी में जहाँ पे ख़वातीन उस लेवल तक वैसे भी नहीं पहुँच पाती, इवन चाहे फैमिली बिजनेस हो तो भी. जी बिल्कुल, फैमिली बिजनेसेस में भी ज़्यादातर मेल सिबलिंग्स ही जो CEO लेवल तक पहुँचते हैं या डायरेक्टर लेवल तक पहुँचते हैं. तो फीमेल लीडरशिप पे बात करते हैं एंड आई रियली वांट टू लर्न. आप बहुत उन स्पेसिफिक लोगों में से जो वहाँ तक पहुँचे. व्हाट आर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्योंकि अभी आप काफ़ी सारी सोसाइटीज़ का भी पार्ट हैं, एंड लाइक हाउ आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस side of the society and building female leaders? I will add something that I will acknowledge the role my brothers had in me being picked for this position. क्योंकि उनका support नहीं होता तो ये नहीं होता ना. My father having faith in me and my brothers believing the fact that I could do it meant a lot. As far as women's empowerment, I think what we want to do is really what I want to do is really demystify. मतलब मुझे लगता है आधी चीज़ें इंटेंशन से भी होती हैं. आई थिंक आई नो अ लॉट ऑफ वेरी टैलेंटेड वुमेन एंड दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट थिंग दैट मैं काम इज़ नॉट अ चॉइस, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो जब औरतें काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखेंगी एंड नॉट एज अ चॉइस, वह कि एंड दिस इज़ पर्सन टू पर्सन. मतलब मुझे लगता है कि काम मेरी जिम्मेदारी है, हो सकता है किसी और को लगे कि घर पे रहना, बच्चों का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है. तो व्हाटएवर यू चूज टू डू, it should be backed by conviction, meaning कि
मैं घर क्यों बैठी हूँ क्योंकि मेरा मियाँ चाहता है कि मैं घर बैठूँ. That's not enough. Now, if you have a desire to do something, you should do it. So half the battle is mental. And when I seek these stories, I see so many women against all odds doing a lot. तो वो भी तो कर ही रही है ना. So grit is important, determination is important. चीज़ें enable होना शुरू हो जाती हैं जब आपका desire हो. और जो मैं देखती हूँ बहुत सारी stories में मिलती हूँ उन औरतों से जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो फैमिली से लड़के मियाँओं से लड़के क्यों क्योंकि उनको लगता है कि ये चॉइस नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ वुमेन कि भाई जैसे आदमी काम करते हैं ऐसे औरतों को भी करना चाहिए. एंड अगेन I do seek out female leaders because I didn't have that kind of mentorship. I didn't have anyone I could look up to. So part of why I'm here today is because maybe somebody listens to this and says कि वो भी तो कर रही है. And not just people who are in my shoes, meaning that I'm a second generation, family business leader. तो मुझे ऐसी और कितनी लड़कियां होंगी जो अपने हो सकता है father's a shopkeeper, doesn't have to be a massive business. Anyone who looks at anything, अगर वो चाहती हैं कि वो अब succeed करें तो वो उनको अपने भाइयों से या कोई भी मेल लीडर है उससे again has to build the credibility and wants to desire to do it. बहुत सारे लोग नहीं desire करते. बहुत बड़ी families, businesses हैं, brands हैं जिनमें sisters and nana. So whenever I meet someone from an FMCG that I know has females in the business, मैं उनसे मुलाकात ज़रूर करना चाहती हूँ. मैं पूछती हूँ कि आपकी बहनें बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आपकी बेटियाँ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं. बिकॉज नहीं, स्पेस खुद भी बनानी पड़ती है. हमारे पास शान में एक नो इंटरप्शन पॉलिसी है. वो इसीलिए है बिकॉज एवरीबडी, इवन मी, आई विल ऑल्सो गेट इंटरप्टेड बाय समवन हु थिंक्स दैट दे आर स्पीकिंग मोर सेंस देन आई एम जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन. सो I don't really... What is the policy about? I mean, specifically to say that if a woman is speaking, let her finish. Don't interrupt her. क्योंकि अक्सर ही हम नोटिस कर रहे थे कि कोई औरत बात करना शुरू करती थी, कोई और कट इन करके उसकी जगह बात कर रहा है. So enough for us to make a policy around it. Wow. So there's that. We enable the environment at work to be conducive for people to show up, whether they have children, they have a nursery. We provided even a salon and कि नहीं टाइम मिलता. ठीक है, मर्दों औरतों को दोनों को टाइम नहीं मिलता. You have a facility, you want to get some kind of thing done, you can go upstairs. There's a gym as well. So you can't ever do everything perfectly, but you can try. So there are initiatives that we take that support women coming back to work. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो to enable the things that if someone desires to come back they can, or desires for that growth they can. बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो काम छोड़ देती हैं कि अब हम अपना करियर ब्रेक दे रहे हैं. बट साइमल्टेनियसली मेरे साथ साथ जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, पार्ट ऑफ व्हाई आई केप्ट वर्किंग, कि एक लड़की थी फाइनेंस में, शी वाज प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम. वो छुट्टी नहीं कर रही थी. बात समझ रही? आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, आई कैन स्टे एट होम इफ आई वांट टू, राइट? कि आज मैं नहीं जाती, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ. पर वो तो नहीं ये कर सकती ना. वो शी सपोर्टिंग अ फैमिली, शी कांट जस्ट टेक अ डे ऑफ. सो शी रियली इंस्पायर्ड मी कि भाई अगर उसने भी करना है तो मेरी भी जिम्मेदारी है, मैंने काम करना है. वो भी आखिरी दिन तक काम करी थी, मैं भी आखिरी दिन तक काम करी थी. सो जब मैं उसको देख रही थी, आई रियली फेल्ट कि आई नीड टू मेक द एनवायरनमेंट मोर कंड्यूसिव फॉर हर एज वेल, बिकॉज़ शी इज गोइंग टू बी डीलिंग विद एवरीथिंग दैट आई एम. मैं अपने बच्चे को ऑफिस लेके आ सकती थी, राइट? एंड आई डिड. So I enabled the environment to be where she could bring her child in too if she wanted, right? Wow. So beautiful. This is beautiful. I really appreciate that. क्योंकि ये होता है because जो leadership position पे होते हैं वो तो ला सकते हैं अपने बच्चों को. हाँ, नहीं leadership पे भी नहीं, मतलब हाँ, exactly. If you're the owners of the business or if you're top management, maybe you can bring your child in. What was interesting is that this empowerment not only came for the woman in the sense that she could bring her child, but men started bringing their kids in. Oh, we had people in our team जिनके babies आ रहे थे, like आदमी अपने babies को घर ऑफिस लेके आ रहे थे, so that the wife was also working. वहाँ पे नर्सरी नहीं थी. आप समझ रहे हो? तो उस औरत को empower किया through our organization, even though she's not employed here. Lovely, beautiful. So it was a वैसे retention भी बढ़ती है. I think so. I think stability रहती है. Retention तो खैर is dependent on many factors, not just this. But yeah, if you have a comfortable, safe environment where you feel like कि मैं not just बच्चे but और भी चीज़ें होती हैं. I think that a new initiative we've taken is for mental health. कि
कोई स्पेशली फ्रॉम अ वुमन एंड एक्चुअली नॉट जस्ट अ जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू, ये सबके लिए है. किसी कोई लॉस है, किसी की अब्बू की डेथ हो गई, किसी की इनफर्टिलिटी है, किसी का कोई बच्चा मे बी स्ट्रगल कर रहा है स्कूल में, ADHD डायग्नोज हो गया, मैनी थिंग्स. सो वी रियली आई फेल्ट दैट इसमें इतने सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें कुछ करना चाहिए. So we've tied up with, I think, an NGO, Saya Health, I think, Saya Care, Saya Health. They are going to facilitate us in setting up these coaching sessions and mentoring sessions and creating awareness about, depression, anxiety. I know ये women empowerment से directly linked नहीं है, लेकिन ये सबके लिए है. उसमें वो औरतें भी अगर उनको पता है कि if I know that if I can recognize I have anxiety at work or if I have depression, तो जब आपको पता ही नहीं कि आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो how do you make your work? How do you make yourself better for you to enable to be working better? तो और ऑफ कोर्स जो इनिशिएटिव्स आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी, अब जैसे डे केयर वाला है इनिशिएटिव है, तो वो भले ही आपने विमेन एम्पावरमेंट के लिए, खवातीन के लिए लिया हो, बट इवेंचुअली तो वो मर्दों को भी हेल्प कर रही है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. आदमियों को देखिए, women are empowered when they have supportive men. So it's not कि सिर्फ आप औरतों से बात करें. एक्चुअली मैं अपनी HR से थोड़ा लड़ रही थी लास्ट ईयर कि ये आप वुमेंस डे का इवेंट कर रही हैं, लेकिन इसमें तो सारे आपने दोनों जेंडर की चीज़ें प्लान की हुई हैं कि मेल भी कर रहे हैं, फीमेल भी कर रहे हैं. एंड शी एक्सप्लेन इट ब्यूटिफुली टू मी. शी सेड वी कांट जस्ट टॉक टू वुमेन, वी हैव टू टॉक टू द मैन, वी हैव टू टॉक टू एक्चुअली. और ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जेंडर स्प्लिट देखें किसी भी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में, इट्स स्क्यूड इन द फेवर ऑफ मैन. तो अगर आप मीनिंगफुल चेंज लेके आना चाह रहे हैं घर में, तो आपको उन आदमियों से बात करनी पड़ेगी कि यार अपनी बीवियों को रिस्पेक्ट दो, उनको ख्याल रखो, अपने बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट लो, उनकी तरबियत में इंटरेस्ट लो. हाउ डू यू बिकम बेटर पेरेंट्स, हाउ डू यू बिकम अ बेटर डैड. आई थिंक फादर्स नीड टू बी टॉट हाउ टू बी फादर्स, बिकॉज वो एक एस्पेक्ट है हमारी अपब्रिंगिंग में जो मिस हो जाता है कि एक बाप की क्या जिम्मेदारी है. माँ की तो हम बहुत बात करते हैं, and even from a religious point of view, a child's rearing is the father's responsibility. When a woman and a man get divorced, who gets the child? In Islam, it's the man who gets the child. The woman goes away. उसको तो 7 साल तक बच्चे को देते हैं, right? We're allowed to keep till 7. उसके बाद तो बाप की तरबियत है. So we actually need to educate our men on how to be better men. How do you respect women? एक औरत की रिस्पेक्ट सिर्फ उसके कपड़ों तक लिमिटेड तो नहीं है ना, वो टाइम ऑफ देने में भी है. लाइक if you're married and your wife hasn't been to a salon in 6 months, then you need to think about what you've been doing. Absolutely. So just having a space where she can relax and go out. लोग तो अपने मियाँ से लंच या डिनर पे जाने की इजाज़त मांगने में ही कि will I go, will I not go. खत्म. So there's so much that we can do for our women, and I think that part of it lies in talking to men as well. Did you get a feedback or something, after these policies? कोई आया, किसी ने बताया, कुछ change feel हुआ? I think so. Sometimes, I mean, it's I'm not seeking validation from people like that, but I think हम employee surveys करते हैं. लोग खुद आके in a group setting casually में बता रहे होते हैं, but no one's like come up to me and been like, this one policy has, of course. generally, आप feedback लोगों से directly नहीं ले रहे होते, आप generally ले रहे होते हो. So I think people are happy. I don't think it's a job ever finished. You are continuously improving. नई चीजें आ रही होती हैं, नए methodologies आ रहे होते हैं. And I love these policies. I mean, each policy, I think कोई separate podcast होना चाहिए शान की HR policy. नहीं, I'm sure there's a lot of room for improvement. आप लोगों से बात करेंगी, वो भी point of view है. There are things that can always be better, and we're striving to always improve things. Great. So one more thing, you are the first woman from Pakistan who is like joining this Champions of Change coalition. ये मैंने पढ़ा अभी recently एक article, तो मुझे इसके बारे में जानना था कि क्या है and how you part of it and how you like adding value. So Champions of Change used to be known as Male Champions of Change, and ये एक Australian organization है जो basically corporate leaders जो हैं वो जमा करती है, male corporate leaders को, because वो actionable change लेके आ सकते हैं in workplaces where women empowerment and things that are about gender diversity, empowerment, bringing people back into the workplace, जो भी औरतों से linked goals हैं, but despite being men, they can bring that change. So ये last year या last year तक हमारे CEO थे Tawana साहब, he was a part of it, and he was quite active in it, I think. So I think the idea was interesting, but of course
I never thought about it because उस वक्त तो सिर्फ आदमियों से बात कर रहे थे. They came to me a few months ago and they spoke to me about joining the platform. तो मैंने उनको बोला वो male champions of change में मैं. Then they told me they're rebranding it and making it more inclusive. That made a lot more sense. And I thought that my participation in will bring diversity to the platform and will bring a woman's point of view, जो कि अभी वहाँ पे represented है सिर्फ by the people who are running it as organizers. So that's an interesting platform. I'm very excited. अभी तक मैंने कुछ उस platform पे किया नहीं है, तो it's too soon for me to be owning any success or acclaim for it. The only acclaim is that I'm the first person to do anything. I'm very excited actually because बहुत सारा actionable change हो सकता है. So next meeting is I think in a few months. Okay. So looking forward to doing that and participating. इंशाल्लाह जब मैं next आपके हसल podcast पे आऊँगी तो मैं आपको फिर actually बता सकूँगी कि मैंने उस platform पे क्या change लेके आई हूँ, what my contributions have been, but it's early days. Okay. एक चीज़ मैं बहुत टाइम सोच रही थी जब आप पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रही थी, मैं सोच रही थी कि व्हाट डू यू सी व्हाइल हायरिंग. लाइक आई नो आप बहुत नीचे लेवल पे तो हायर नहीं कर रहे होते होंगे, मे बी कोर टीम लेवल पे आप कर रही होती होंगी, बट फिर भी क्योंकि यंग प्रोफेशनल्स हमें देख रहे हैं तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस सुनना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चीज़ देखती है हायर करते वक्त. Honestly, if I was to really define an ideal candidate, not an employee because उसमें अलग चीज़ें आ जाती हैं, but जब मैं किसी से मिलती हूँ तो मुझे ये जानना ज़रूरी होता है से कि उनके अपने गोल्स क्या है. तो if someone is clear about what they want, it doesn't have to be necessarily career related. मतलब ज़िंदगी में क्या चाहिए, कहाँ देखना चाहते हैं, क्या उनकी ख्वाब क्या है. I like to understand. I like people who know what they want. Okay. They know, they are clear, have a direction कि भाई यहाँ जा भी हम यहाँ हैं, आगे हम यहाँ जाना चाहते हैं. दूसरी चीज़ उनको क्लैरिटी हो अपने प्रायोरिटीज़ पे, उनके लिए क्या ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है. क्योंकि देखिए कॉम्पिटेंस कैन बी डेवलप्ड ओवर टाइम. मीनिंग कि अगर किसी में कोई ऐसी चीज़ है जो उसको नहीं पता, मीनिंग सम स्किल सेट दे डोंट हैव, दैट स्किल सेट कैन बी बिल्ट ओवर टाइम. सो आई टोल्ड यू गोल्स, प्रायोरिटीज़ पता हो और ड्रिवन होना चाहिए. आई थिंक दैट शुड कम अक्रॉस इन सम मैनर. The desire to succeed, not at any cost, because that's terrible. I think मुझे अगर ये महसूस हो कि they're willing to put in the hard work. I think that today when I meet a lot of people, they want shortcuts, they want the money, they want the glory, but वो काम नहीं करना चाहते. मतलब अगर आप कोई ग्रास रूट एंट्री लेवल जॉब की बात करें तो किसी भी मतलब आप डॉक्टर भी बन रहे होते हैं तो वहाँ रगड़ा लगता है पहले साल. So I think that you should be willing and ready to take that experience where you are going to do grunge work. It's not going to be glamorous. You'll be doing the hardest work that you're going to do right at the start. And जो लोग इस चीज़ को absorb करते हैं वो सिखाता है आपको. अगर आप सेल्स टीम में जा रहे हैं तो आप मार्केट रिसर्च पे जाते हो, आप बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करते हो. It's not fun, but it's what's necessary. Because it's steps, right? मतलब आप एक स्टेप करोगे, दूसरा स्टेप करोगे, तीसरा स्टेप, हो सकता है वो आप काम दोबारा ज़िंदगी में ना करो, लेकिन वो जो फाउंडेशन बिल्ड होती है with hard work in the first couple of years of your work experience, especially if you're working in a decent organization and have found somebody who will guide you. अक्सर थोड़े एमलेस हो जाते हैं. आप किसी अपने सीनियर को, मे बी कोई कॉलीग हो, उसको ढूंढें जो आपको लगता है कि यार this guy is on the right path. Please seek out mentors yourself. Yeah, I think those people who work hard and are determined, they set themselves apart. You can really tell कि लोग कहाँ जाना चाहते हैं. I think the hunger. You can say hunger is something that हंगर, बट देयर शुड बी डिजायर. एंड मतलब काम से नहीं रहना चाहिए. हंगर तो सब में होता है. सब ग्रेजुएट करके चाहते हैं कि भाई हमें फलां जगह बेस्ट नौकरी, बेस्ट ये, बेस्ट जॉब, बेस्ट मनी. बट is everyone willing to put in the hard work to get there? That's debatable. willingness is way more important. Willingness and willingness. Okay. willingness भी होगी. आई थिंक कि shy away नहीं करना चाहिए मेहनत करने से, कि कोई भी सक्सेसफुल बगैर मेहनत करे नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो. डू यू थिंक स्टीव जॉब्स डिडंट वर्क हार्ड? सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? इज मनी इम्पोर्टेंट? इज योर क्रेडिबिलिटी इम्पोर्टेंट? इज योर जर्नी इम्पोर्टेंट? बहुत सारा पैसा जल्दी मिल गया भी एक चैलेंज होता है. रादर देन चेसिंग द मनी विल कम. Interesting. So वो जो young female entrepreneurs
entrepreneurs ये young female professionals आपको देख रही हैं, उनके लिए आप क्या advice देना चाहेंगे? ख्वाब बड़े देखें. I think it's important to have dreams. It's important to then sit down and break that dream into bites. उसको आप तोड़ें कि क्या मैं एक चीज़ करना चाहती हूँ. मैं फैशन ब्रांड लॉन्च करना चाहती हूँ. अच्छा भाई, फैशन ब्रांड किसके लिए लॉन्च करना चाहती हैं? ये डिटरमाइन करें कि कौन आप किससे बात कर रहे हैं. उसकी पर प्लानिंग, मतलब यू नीड टू प्लान आउट व्हाट यू वांट टू डू एंड देन डू द फर्स्ट पार्ट, देन यू टेक द सेकंड पार्ट, देन यू टेक थर्ड पार्ट. सो अगर आप ये एक एक वो कहते हैं हाथी को कैसे खाते हैं, एक साथ तो नहीं खा सकते, एक एक निवाले से खाते हैं ना. सो वन बाइट एट अ टाइम यू विल गेट देयर. जस्ट ब्रेक अप दिस लार्ज इम्पॉसिबल टास्क इनटू स्मॉलर डूएबल थिंग्स. ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लें, अपना लोगो बना लें, एस्थेटिक बना लें, मतलब प्लान आउट व्हाट यू वांट टू डू, व्हाटएवर इट इज़. मुझे चांद पे जाना है, वो किस तरह जाओगे भाई? प्लान करो, देखो और लोगों से सीखो. 50 लोग, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नॉवल है. somebody has done it before. Go seek out people who've done that, learn from them, speak to them, learn from their failures, and don't give up. I think सबसे ज़्यादा जो एक key factor है in success and failure is grit. Consistency, करते रहना, गिरते रहना. आप मतलब entrepreneur की जर्नी आसान नहीं होती. So I think उसमें भी ग्लैमर को हटा के अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत दिन रात की मेहनत लगती है to make anything up. Whether that's a brand, whether that's any kind of success that you want, whether you're an athlete or anything, कोई भी चीज़ बगैर मेहनत की नहीं मिलेगी. तो to just break it up into parts and do it. Yeah. चैलेंज पे आपने बात की. अब मैं ये जानना चाहूँगी कि ये हमने प्रोफेशनल ग्रोथ पे तो बात की है, बट आई रियली वांट टू लर्न अबाउट योर पर्सनल ग्रोथ कि आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी ने आपको लाइक हाउ हैज़ दिस शेप्ड यू एज अ पर्सन. पर्सनल ग्रोथ पे बात करें. I think I've developed quite a bit from what I used to be when I started roughly 10-15 years ago. पहले तो बहुत ज़्यादा imposter syndrome होता था कि वाकई में am I good enough? Can I do it? Am I how how others are perceiving me? Am I really who that is? And learning how to deal with that कि नहीं, it's okay. हर चीज़ नहीं आती आपको, आप सीख जाओगे. और वो कैसे सीखोगे? वो फैसले करके सीखोगे, डिसीजंस लेके सीखोगे. मैं जब शुरू किया था काम तो उस वक्त ना मैं डिसीजन मेकिंग में बहुत वीक थी मेरे हिसाब से. It would be difficult for me to make decisions. And that's something that I had to train, क्योंकि हर रोज़ आपको डिसीजन लेने होते हैं. और ये मैंने सीखा कि सही और गलत डिसीजन कुछ नहीं होता, ऑन टाइम डिसीजन होता है. तो उस एक आई नो इट सीम्स लाइक इट्स नथिंग, बट एक्चुअली दैट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ. बिकॉज जहाँ पे पहले मैं वैलिडेशन सीख करती थी कि भाई मैं कहीं कुछ घर में कुछ चेंज कर रही हूँ या कोई आई एम मेकिंग एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन माई लाइफ, आई वुड रिफर टू अदर पीपल लाइक माई पेरेंट्स कि भाई मैं ये करने जा रही हूँ, आप बताएं. या मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी कि शुड आई डू दिस. And I think a lot of that has to do with my husband as well, because he was somebody who said कि just make the decision. मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं, जो भी तुम फैसला करोगी सही करोगी. उसकी आदत नहीं थी. तो जब as you start working and gaining experience, that gave me a lot of confidence. कि ठीक है, फैसले मतलब पहले डर लगता था ना फैसले करने में. क्यों डर लगता था? ये नहीं आता था कि गलती हो जाए. तो अब वो गलती से जो निकल के आप डिसीजन मेकिंग में आते हो, I think that helps. It developed me into a more confident person. I think आप procrastinate करते हैं कि मेरा फैसला गलत ना हो जाए, तो फिर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं फैसला. नहीं, I still struggle with that. ऐसा नहीं है, कुछ फैसले हैं जो I know कि मैंने mentally बना लिए, लेकिन translating that into an action takes time. And sometimes you struggle. But then you remind yourself कि नहीं, it's better to do it quickly than to delay it. कॉन्फिडेंस आता है अपने आप पे, सेल्फ बिलीफ आपका थोड़ा सा ज़्यादा पुख्ता होता है कि आप जो बात कर रहे हो वो किसी चीज़ में रूटेड है, वो ऐसी हवाई बात नहीं है. काम करने से एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस से क्रेडिबिलिटी मिलती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है कि आप थोड़ा वैल्यूड फील करते हो ना. मतलब इफ़ आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समवन एंड आई एम नॉट स्पीकिंग ऐसी हवाई बात नहीं करी, मैं कुछ बात करी हूँ तो उसमें कोई वजन है क्योंकि मैंने वो काम किया हुआ है पीछे. तो उसमें आपको अपने आप थोड़ा यकीन ज़्यादा आना शुरू होता है कि आई कैन डू इट और आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इंटरेस्टिंग. ओके, सो बिफोर क्लोजिंग द इंटरव्यू मुझे जानना है कि क्या बिजनेस एडवाइस है जो आप व्यूअर्स को देना चाहेंगी, जो आपको किसी से मिली हो या आपने सीखा हो, यार दिस इज द बेस्ट बिजनेस एडवाइस दैट आई वांट टू गिव टू यू. बेस्ट बिजनेस एडवाइस. No, it's such a, it's a बहुत बड़ा टॉपिक है. बेस्ट तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं depending on your situation.
I don't know, best business advice. Don't be afraid of making mistakes. सब गलतियां करते हैं, बट लगे रहो. अभी हमने हसल की टी-शर्ट्स प्रिंट करवाई है, उसके पीछे मैंने लिखा है लगे रहो. So because that's the hustle. Honestly, I like the word hustling. Someone asked me how you're doing. I say I'm still hustling because life is a hustle. Like आपने करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है. And actually लगे रहो कब वही मतलब है. हाँ, वाकई. You have to be consistent. You know, and when I was younger, you talked about my father being a mentor. तो लोग अक्सर ये सवाल करते थे, लेकिन मैं भी उनसे ये सवाल करती थी कि अबू, how did you become successful? कि मतलब how did it happen? You know, although मेरे सामने हुआ था, I saw it happen, and I loved his answer. He said by doing the same thing for 40 years. मतलब 40 साल तक मैं लगा रहा, तो फिर ये यहाँ इस तरह की बिल्ड हुआ. किसी भी वक्त मैं छोड़ देता तो वही रुक जाती चीज़. So you have to keep going, you know. And as a second generation family business owner, I feel like I carry that responsibility. कि अक्सर ये सोचते कि second generation या third generation में ख़त्म हो गया. So not only do I have the responsibility of running it and making sure that यहाँ तक है तो यहाँ तक जाए, but also preparing the second or third generation कि वो उस तरह के elitist और privileged और ना काम करने वाले ना turn out हों. Wow. और उनमें वो values हों जो कि काम को आगे बढ़ाने वाली हों. ये भी जिम्मेदारी है. So we have both those things, not just take care of the corporate itself, but also nurture the next generation of leaders within the family so that they can run it too. Wow. So that's how it is. I love this. I love what initiatives you have taken for Shan. We love Shan and Dipitt both. Thank you. And I would look forward to the next podcast with you because I'm sure you there's a lot that you can teach to not just young female entrepreneurs, but to everybody, male entrepreneurs as well. So thank you so much for being with us. Thank you. Any last word or advice you want to share? No, just to you. Thank you for firstly, thank you to your and to your team and the people who've enabled this platform to exist, and to you for persevering. आपने बताया था आप 75 podcasts तक पहुंच गई हैं, तो good luck and Thank you. You get to where you want to go as well. Thank you. Thank you so much.